Good morning, students. Welcome in science class. Yes, beta, how are you all? Fit? Very nice, beta. I'm also good. As you know that, beta, in the previous classes we have started lesson 10, Save Natural Resources. Okay, in that classes we have discussed about natural resources like soil and water. What is soil? Importance of soil, how can we save the soil. Okay, in the similar way, water, importance of water, water pollution, and how can we save water, what type of activity we do to save water. Okay, now in this class we will discuss about air. What is air? Everybody know air is a mixture of gases. How can we save air, importance of air, and air pollution. Okay, and fossil fuels. Okay, what are fossil fuels? Today we are going to discuss these topics one by one. So ready for reading? Okay, beta, let's start the reading. Open your book, page number 107. Okay, beta. Yes, now beta, let's start the reading. Air is a mixture of gases and it is present in the lower layer of atmosphere. Moving air is called wind and it possesses a lot of energy. Air क्या है बेटा? It is a mixture of gases. ठीक है? In air, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, water vapors, and many gases are present. So air is a mixture of gases and it is present in the lower layer of atmosphere. As you know that beta, atmosphere has many layers and air is present in the lower layer of atmosphere. Moving air is called wind and it possesses a lot of energy. Moving air, जो हवा चल रही है उसको हम wind कहते हैं and it possesses a lot of energy. इसमें बहुत सारी energy होती है. Importance of air. All living things breathe in air for their survival. Air is very important for us. Without air, we can't survive. All living things need oxygen to breathe. ठीक है? For their survival. They breathe in air for their survival. Green plants also take in carbon dioxide present in the air to prepare their food. Green plants also required carbon dioxide that is also come from air, so they use carbon dioxide to prepare their food by the process of photosynthesis. Okay, then third will be animals take in oxygen for respiration. As I have already told you that without oxygen we cannot survive, so animals take oxygen for respiration. Next, wind is used to run mills for generating energy. जैसे बेटा वाटर को हम यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो सिमिलरली विंड इज यूज टू रन मिल्स. ये विंड मिल्स है बेटा और विंड यूज करते हैं हम इस विंड मिल को जनरेट करने के लिए टू गेट एनर्जी एंड बाय दिस एनर्जी वी गेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ दीज आर द यूजेस ऑफ एयर. नाउ एयर पोल्यूशन. What is air pollution? Same as water pollution. The process by which clean air get contaminated with other gases. प्रोसेस जिससे क्लीन एयर जो है वो इम्प्योर हो जाए, कॉन्टामिनेटेड हो जाए विद अदर गैसेस, डस्ट एंड केमिकल, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. ओके, द कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. एंड हाउ टू सेव फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड? कैसे ये और एयर पोल्यूशन होता है? व्हाट आर द कॉजेज बेटा? व्हीकल्स फ्रॉम द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज. ठीक है, जो आप डस्ट वगैरह या पोल्यूटेड एयर आती है उससे हम ये एयर पोल्यूशन होता है. ठीक है, हाउ टू सेव एयर फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड एंड व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू टेक टू मेक द एयर क्लीन. ठीक है, सबसे पहले क्या है बेटा? अननेसेसरी बर्निंग शुड बी डिक्रीज्ड. हम क्या करते हैं बेटा? जो भी गार्बेज वगैरह है वी कलेक्ट दैट गार्बेज एंड बर्न दैट गार्बेज. दैट विल क्रिएट एयर पोल्यूशन. सो अननेसेसरी बर्निंग शुड बी डिक्रीज्ड. Second, tall chimneys should be present on factories. Use tall chimneys in factories. Okay. More and more trees should be planted.
We have to plant more and more trees to make the environment clean, to make the air pure and neat and pure. Using pollution free vehicles. We have to use vehicle that is pollution free, that do not cause any pollution. We have to use that type of vehicles. So these are the steps, these are the prevention we have to take to make air clean. Okay. Next है बेटा, next resources है fossil fuels. Now first question is that what is fossil fuels? Okay, what are fossil fuels? Fossil fuels क्या है? The remains of plant and animals which were buried deep under the earth got converted into fossil fuels. जो प्लांट्स और एनिमल्स, डेड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, जो मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, वो अर्थ के अंदर चले जाते हैं. दे बुरिड डीप अंडर द अर्थ, अर्थ के अंदर दब जाते हैं. एंड दे आफ्टर मैनी ईयर्स दे get converted into fossil fuels. They take so many years to form. Okay, these fuels contain a lot of energy. और ये जो fuels है इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है. Some of the fossil fuels are coal, charcoal, petrol, diesel, etc. जब ये remains जो होते हैं, dead and decaying matter होते हैं प्लांट और एनिमल्स के, they got buried under the earth and after so many years they get converted into fossil fuels like coal. कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा ये, पेट्रोल में, डीजल में एंड चारकोल में. ठीक है, सो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या है बेटा? वी यूज फॉसिल फ्यूल्स मेनली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. वी यूज कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वी यूज पेट्रोल, डीजल. एनर्जी कैन बी यूज फॉर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क. हम इन फॉसिल फ्यूल्स को एनर्जी जनरेट करने में यूज करते हैं एंड वी यूज दिस एनर्जी इन मैनी मैनी वर्क्स. डिफरेंट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज. अलग अलग जो फॉसिल फ्यूल्स है, वी यूज डिफरेंट फ्यूल्स फॉर डिफरेंट पर्पज. ओके, लाइक फर्स्ट क्या है बेटा? कोल टू रन द स्टीम इंजन. वी यूज कोल टू रन द स्टीम इंजन. वी यूज कोल फॉर कुकिंग फूड. ठीक है, कई पर्पज में हम यूज करते हैं. देन कैरोसिन, कैरोसिन सेम टू फिल इन लैम्प्स एंड स्टोर. ठीक है, पहले हम कैरोसिन को खाना वगैरह बनाने के लिए भी यूज करते थे. नाउ वी यूज एलपीजी. नेक्स्ट है बेटा पेट्रोल एंड डीजल टू रन वेरियस व्हीकल्स. ठीक है, पेट्रोल वी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यूज टू रन व्हीकल्स. एलपीजी दैट इज यूज्ड फॉर कुकिंग. एलपीजी गैस जो आप गैस सिलेंडर यूज करते हो किचन में, दैट इज एलपीजी. ठीक है, एंड दिस गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग. ओके, नाउ हाउ टू सेव फ्यूल. कैसे हम फ्यूल को सेव कर सकते हैं? दे टेक बेटा मैनी मैनी ईयर्स टू फॉर्म, सो वी हैव टू यूज दीज रिसोर्सेज in a limited quantity. ठीक है, we have to use these resources wisely. They are very limited supply. ठीक है, इसलिए हमें इन्हें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए. जब हमें इनकी जरूरत हो तभी हमें यूज करना चाहिए. अदरवाइज वी हैव टू यूज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज एयर, वाटर या सन. ओके, सो कुकिंग ऑन अ स्लो फ्लेम सेव्स फ्यूल. सबसे पहले क्या है, हमें फ्यूल को सेव करने के लिए स्लो फ्लेम पे कुकिंग करनी चाहिए. Vehicles should be kept in proper condition as old and damaged vehicle consume more fuels. Vehicles को हमें proper condition में रखना चाहिए क्योंकि अगर जो खराब vehicles है they consume more fuels. Food cooked in converted vessels employ less fuels. Food cooked in covered vessels, अगर हम खाने को ढक के बनाते हैं ना बेटा तो they use less fuels. Avoid heating the food again and again. हमें बार बार फूड को गर्म नहीं करना चाहिए. ठीक है, डज ऑल्सो कंज्यूम मोर फ्यूल. माई मॉम ऑलवेज कवर द वेसल वाइल कुकिंग. ठीक है, कवर करके अगर हम वेसल्स, बर्तन को कवर करके अगर हम खाना बनाते हैं, that consume less fuels. So these are the prevention, these are the precautions we have to, these are the steps we have to use to save fuels. So beta you have to read page number 107 and 108. Okay, thoroughly. Yes beta, today we are going to discuss about air. Air is very important for all living things. We cannot survive without air. Air is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, dust particle, water vapor, etc.
all living things need air to live, need oxygen from air to breathe. All plants breathe carbon dioxide, which they get from air. Okay, we cannot see air, but we can feel it. Moving air is called wind. To prove this, you have to take some pieces of paper in your hand and keep your hand in front of the fan, in front of moving fan. What happened to the pieces of paper? They are blown away due to moving air. Okay, now uses of air. Air is needed for burning. Air helps in flying kite. Air moves the fan of windmill. It helps in drying clothes. We feel air in balls, balloons and tire. We need clean and fresh air to breathe. Okay, these are the uses of air. Now air pollution. The presence of unwanted harmful substances in the air is termed as air pollution. How does air get dirty? Air pollution happens when air gets dirty. We cannot breathe dirty air. It makes us fall ill. Smoke from garbage, cars, burning leaves make the air dirty. Smoke from factories also make the air dirty. When we cut trees, we get less fresh and clean air. We should try to stop air pollution, and air pollution is bad for all the people, animals and plants living on the earth. Okay. Fuels are formed by the remains of dead and decaying plants and animals which were buried deep under the earth, got converted into fossil fuels. Old plant, dead decaying and plants formed coal, and dead animal formed oil. Some of the fossil fuels are coal, charcoal, petrol and diesel. Okay. Coal. Coal is used to run the steam engine. In villages, coal is used to burn chula, to cook food. Coal is also used to generate electricity. Second, a bit of petrol. Petrol is used to run various vehicles. Petrol is also used to generate electricity, petrol, diesel. Kerosene. Kerosene is used to fill in lamps and stove. Kerosene also used in cooking food. Last is LPG. LPG is used for cooking food in cities. Okay, these are the uses of fossil fuels. Now, how we can conserve fossil fuels? Okay, we have to take different steps to conserve these fossil fuels or these resources. First, we can start by using less amount of electricity. We can install solar panel, turn off the vehicles while standing on signals, use energy efficient electrical appliances, force on reduce, reuse or recycle. Okay, use 3 R's. Okay, so beta, you have to read page number 107 and 108 of lesson 10 Save Natural Resources thoroughly. Okay, these two topics, air and fossil fuels, you have to read thoroughly. Okay beta, thank you, bye bye.